पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ धारे हैं एजुकेशन के, इस पे हम अक्सर बात कर चुके हैं। एंड देन ऑफ कोर्स हर पेरेंट के लिए ये सवालिया निशान होता है कि वो अपने तई तो बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा है। दे सेंड देयर चाइल्ड देयर वार्ड टू द बेस्ट स्कूल दैट दे कैन अफोर्ड, लेकिन क्या वो स्कूल उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतर रहा है या नहीं। पिछले दिनों बल्कि पिछले कई सालों से आपने ये देखा कि ये बात ज़ेर बहस थी कि प्राइवेट स्कूल्स अपनी फ़ीस बहुत बढ़ाते हैं, वहाँ की जो सहूलियात हैं वो क्या मैच करती हैं उनके फ़ीस स्ट्रक्चर को। सेकेंडली वहाँ की टीचर्स की जो ट्रेनिंग है क्या वो आज के ज़माने के हिसाब से है। टीचर्स की एक अलग अपनी राय होती है कि भाई आज के बच्चे को कंट्रोल करना, उससे बात करना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे विद द एडवेंट ऑफ चैट आईजीटीपी एंड ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई दफ़ा ये देखने में आया है कि बच्चे अब अपना पूरा का पूरा असाइनमेंट ऑनलाइन करके ला के दे देते हैं। सो इन एन एडवेंट लाइक दिस, हाउ आर पाकिस्तानी स्कूल्स रिस्पॉन्डिंग? आज हमारे साथ मौजूद होगी द टीम फ्राम द हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल। दे आर अ 41-year-old इंस्टीट्यूशन विद ओवर 35 campuses all over Sindh, and being in the forefront and being in this business for the last 40 years, 4 decades में यकीनन उनके पास ज़बरदस्त इंसाइट्स मौजूद हैं कि हाउ द स्टूडेंट इज़ चेंजिंग, हाउ द रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग एंड हाउ कैन स्किल डेवलपमेंट बी इनकलकेटेड। हमारे साथ आज मौजूद हैं अथर और हसन। दे बोथ माशाल्लाह दे हैव डन ब्रिलियंट फॉर देमसेल्व्स, दे बोथ आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज एजुकेशनिस्ट हैं कि व्हाट आर देयर प्लान्स फॉर द हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल। थैंक यू वेरी मच। यू आर अ यंग लीडरशिप, यंग डायनामिक लीडरशिप। अथर क्या कहेंगे व्हेन यू लुक एट द स्टूडेंट टुडे? हम एज अ मैनेजमेंट, एज समबडी who's running 35 schools across Sindh, आपको लगता है कि आज के बच्चे मुश्किल हैं, पेरेंट्स मुश्किल हैं या हालात मुश्किल हैं? देखें, आई थिंक हालात ऑब्वियसली मुश्किल हैं, बिल्कुल हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इन पीपल, वो उसको अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं। बट इन ऑल दीज सिचुएशंस, जिस सिचुएशन में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, हालात मुश्किल हैं, बट वी आर टैकलिंग ऑल दोज चैलेंजेस। ठीक है। अदर टीचर्स को रिटेन करना कितना मुश्किल होता है? बिकॉज ऑफलाइन वी वर टॉकिंग अबाउट द एक्सोडस व्हिच इज़ हैपनिंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्रेन ड्रेन। टीचर्स और इस तरह के स्किल लोगों के लिए बाहर भी बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ है, ख़ासतौर पर अगर मैं मिडल ईस्ट की बात करूँ। आपके लिए मुश्किल होता है ट्रेंड क्वालिफाइड स्टाफ को रिटेन करना? It is difficult to train them, but we have a hiring process in our school, which is very it's a process in which teachers को हम उनकी qualifications देखते हैं, उनके experience देखते हैं, उसके बाद उनको hire करते हैं, and then we continuously train them. We have in our school CPDRs, continuing professional development hours. फिर हम अपने curriculum को we're changing it rapidly as per time. So जिस तरह जो need आती है these changing times, हम उसको अपने करिकुलम में इनकलकेट कर लेते हैं। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वी हैव ए ऑर्गेनोग्राम विच वी फॉलो, इन विच वी हैव आवर एकेडमिक मैनेजर्स, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर्स। तो हम करते ही हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग अगर हमें इनकॉर्पोरेट करनी है या एक कल्चर ऑफ क्वेश्चनिंग इनकॉर्पोरेट करनी है अपने स्कूल के अंदर, वी इनकॉर्पोरेटेड इन आवर करिकुलम एंड देन वी ट्रेन आवर टीचर्स इन अ वे दैट वो स्टूडेंट्स में वो कल्चर रिफ्लेक्ट भी हो। फिर बिल्कुल सही। अच्छा हसन, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान की हम वी टॉक अबाउट 6 करोड़ किड्स, 60 मिलियन किड्स बीइंग इन स्कूल राइट नाउ, और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे पास ये है कि 40% इसमें से प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब हम पब्लिक डिस्कोर्स सुनते हैं उसमें प्राइवेट स्कूल्स आर ऑलवेज डीम टू बी द डीमन। यानी पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं, ये पैसे ज़्यादा लेते हैं, फ़ीस ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बच्चे को कुछ नहीं सिखा रहे। Why are private schools created to be, having that negative connotation? To be honest, there are many out-of-school children in Pakistan than there are children who are studying in 2 करोड़ बच्चा हम कहते हैं कि जो स्कूल जाने की उम्र का स्कूल नहीं जा रहा, और 40% ऑफ 6 करोड़ is a big number. अगर प्राइवेट स्कूल्स ना हो तो these kids are going to be out of school as well. So private school is taking the responsibility of educating the entire Pakistan. And if you see government schools, they're ghost schools. There are no teachers, there are no system. Unfortunately, there are cattle farming being done in government schools, right? So private schools are the only way forward, and the entire world is moving towards privatization. They're privatizing airlines, they're privatizing industries. So privatized schools being private is a good thing, it's not a bad thing. We deliver quality, we know how with what things to manage, and we can deploy resources, we can utilize resources more efficiently, we can train teachers better, we can introduce lots of new features
for students which they're not given at the government school level. हसन, मुझे बताएं कि आपका हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट? 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और मैं कल भी यानी आई वाज एट अ वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट रिव्यू रिपोर्ट, और उसके अंदर बात यही हो रही थी कि हम जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, या कहा जाता है कि 70% ऑफ द किड्स हु आर ऑफ एज 10 वो लर्निंग पावर्टी का शिकार हैं, कि अगर आप उनको एक पैराग्राफ भी दें तो वो समझ नहीं पाएंगे. सो दे आर मेजर गैप्स देयर. लेकिन जब हुकूमत असेसमेंट करती है वो सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक स्कूल्स का करती है. आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ये एम्बेड बढ़कर प्राइवेट स्कूल्स पे भी लागू होना चाहिए? Of course, there should be a standardized testing procedures across Pakistan so that एक ही सब level के ऊपर अपनी एक benchmark create कर सकें. So there should be a nationwide testing so that we know that which school is performing well, which sector is performing well, which is the primary level needs to be worked upon. क्योंकि हमारे यहाँ issue ही reading, listening, writing, reading का है. Absolutely. And people cannot read simple sentences. People cannot speak good Urdu or good English. Communication skills are and plus the world is moving so in a rapid sort of pace. हम अपनी basic problems से नहीं निकल पा रहे, let alone all the artificial intelligence or all of the IT things which are the new age skills. बिल्कुल सही. अच्छा, it's very good that we landed on the new skills and new age skills का हमारा domain. अतर, आप क्या समझते हैं? बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि आज के बच्चों को coding should be made into an essential subject, and you are just not a school, you're a school system. तो आप अपने curriculum में इन new skills को कितनी अहमियत देते हैं? So skilled labor की अब definition change हो गई है. पहले ये होता था कि skilled labor were called people who have good degrees, good qualifications. लेकिन अब ये डेफिनेशन अनस्किल्ड लेबर की तरफ चली गई है. स्किल्ड लेबर की अब डेफिनेशन ये हो गई है कि टेक्निकल एक्सपर्टीज़ उस बंदे में है कि नहीं है, whether he is employable, whether he is employable or not. तो digital skills, coding, these things are very important. We have integrated it in our school through robotics. हम अपने करिकुलम के अंदर भी in our managerial level हमने artificial intelligence incorporate कर लिया है. So the planning, the timetable making, ये सब चीज़ें अब हमारे AI के थ्रू ही हो रही है. Do you plan to go, net zero की जैसे बात की जाती है sustainability wise? Do you want to be paperless? Are you really going to be the school of tomorrow, Athar? We are already paperless, so we don't give circulars to our parents now. Super. We give them digital circulars. Sustainability goals जो UN ने define किए हुए हैं वो हम बच्चों में भी inculcate करते हैं, उनको भी बताते हैं कि क्या sustainability goals हैं. Challenges जो अभी future के आ रहे हैं हमें नहीं पता कि वो क्या challenges हैं. अभी एक हम pandemic से गुजरे हैं, हमें नहीं पता था ये चीज़ आएगी. But through education only we would know and we would be able to cater to such problems in the future. अच्छा, मुझे बताएं, because Hassan, you are, your schools are operating in the province of Sindh. What would you say about your standards of inclusion? Gender diversity आपकी क्लास में कितनी होती है? Do you see, because मैं अब अक्सर जब बात करती हूँ तो girls education is no more a demand issue, it's a supply issue. Parents चाहते हैं schools कम होते हैं, तो आपकी classrooms में what's the mix like? Okay, so we're very big on diversity, inclusion, equity. We encourage especially able students who are physically impaired to join our schools as well. We take admissions across religious lines or across ethnic lines or इस तरीके से, because we are a school, we are an education and you're providing. double blinded, you don't care कि बच्चा किस caste, creed, religion से belong करता है. किससे belong करता है. दूसरा ये कि we have co-education system, we have girls only campuses as well, we have boys only campuses as well, because our society is very mixed, right? So some of the parents who prefer sending their girls to all girls schools, single gender. So but in general as an educationist we're quite liberal in our approach, and we promote co-education because in a society we do interact with opposite genders as well, right? So we cannot keep you cannot keep a gender confined. Athar and Hassan, because this is a very interesting conversation. I'm into my last minute of the segment. मुझे ये बताइए कि our children and teenage depression, mental well-being has also become very big, and because बच्चा इतना time school में गुजारता है तो school के लिए sensitize होना बहुत ज़रूरी है. Do you have counselors, and how do you ensure कि आपकी student body is mentally not pressurized, not stressed and happy? So
socio-emotional development हाँ. in our school is extremely important, and mental well-being is extremely important. And for that we are members of Anti-Bullying Alliance of the UK, which gives us certain guidelines कि कैसे हम इन चीज़ों को manage करें. बाकी we have student counselors and guidance counselors who sit down with students and ask what problems they're facing at home domestically, or if they're struggling in terms of their academics. So we do have all of these systems in place. In fact, when I returned back from the UK, for a very certain period of time, I was the counselor for students and guiding them through their careers or in terms of their mental well-being. Most importantly, it allows the school system to have listening tools. यानी वो समझ सकते हैं कि बच्चे की क्या requirement है, because they're always going to be कि society बच्चे से क्या चाहती है, student से क्या चाहती है, school administration के अपने goals क्या हैं, parents क्या चाहते हैं. But in that mix, nobody is listening to the students. Athar, you'd like to add to that? Yeah, for sure. So we train our teachers in child psychology as well. Okay. So they recognize the problem in students कि बच्चा अगर बहुत sharp है, बहुत intelligent है, but for some reason or the other he is silent in a classroom, वो अब इतना engage नहीं कर रहा classroom activities के अंदर. So the teacher knows how to tackle these issues then with regards to that child. So then we counsel the parents as well. So हमने एक community भी अच्छी बनाई हुई है अपने school के अंदर, जो कि एक दूसरे के साथ engage रखती है. And I think that's extremely important, क्योंकि when I was reading up on the subject of child psychology, usually बच्चे के पास vocabulary भी नहीं होती अपने आप को express करने के लिए. So the teacher, the counselor, the system has to be very cognizant. Of course, ये triad complete नहीं होगा without the parents involvement, तो वो भी कई signs pick कर सकते हैं. लेकिन teachers are usually the first stop जो flag करते हैं कि भाई there is something wrong. So I think this is a very dynamic and forward-looking progressive system that you have. Thank you, Athar. Thank you, Hassan. I wish you all the very best, because we need good schools in Pakistan. That cannot be underscored and emphasized enough.